Hello everyone, this question appears in class 6th NCERT chapter of integers. This is second question of its exercise 6.2. So the question says that use number line and add the following integers. A part is 9 plus minus 6. So firstly हम number line पर 9 mark कर लेंगे. Then plus minus 6. तो minus 6 सेट करना है, नेगेटिव इंटीजर है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे. So 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So 9 plus minus 6 नेगेटिव इंटीजर से लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे 6 स्टेप 1 2 3 4 5 6. Then the sum will be plus 3. Part B is 5 plus minus 11. Firstly number line पे 5 मार्क करेंगे. Then plus minus 11 नेगेटिव इंटीजर है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे 4 3 2 1 0 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7. 5 plus minus 11 means 11 step left hand side मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So the sum will be minus 6. Minus 1 plus minus 7. So minus 7 ऐड करना है, नेगेटिव इंटीजर है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे. Minus 1 plus minus 7. So move towards left hand side 7 steps 1 2 3 4 5 6 7. So minus 8 will be the sum. Part D is minus 5 plus 10. So here हम minus 5 मार्क कर लेंगे. Then plus 10 पॉजिटिव इंटीजर मीन्स राइट हैंड साइड मूव करेंगे. So minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5. Minus 5 plus 10 means toward right hand side 10 steps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So the sum will be equal to 5. Part E is equal to part E is minus 1 plus minus 2 plus minus 3. So नेगेटिव इंटीजर सेट करने हैं, so मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड. So minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7. So minus 1 plus minus 2 means move toward left hand side 2 steps 1 2. Then plus minus 3 means move toward left hand side 3 steps 1 2 and 3. So the sum will be minus 6. Part F is minus 2 plus 8 plus minus 4. So firstly हम 8 मार्क कर देंगे नंबर लाइन पर. Then minus 2 and minus 4 सम 8 करना है, मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे. So my 8 plus minus 2 means left hand side 2 steps, then plus minus 4 4 steps,
left hand side 3 and 4. So the answer will be 2. So minus 2 plus 8 plus minus 4 is equal to 2. That's our final answer. Thank you.